Hello friends, welcome to ProTalent, and we are bringing second session on key learnings from recent Supreme Court judgments. This kind of information will be very useful to you for your preparation for various competitive exam. One of them would be CLAT. At the same time, some of you are looking at UPSC civil services. उनके लिए भी ये बहुत काम के modules है. Primarily, this is very useful to you with respect to gaining knowledge about what are the important judgments provided by Supreme Court, what issues they dealt with in this particular judgment. आज के ये session में I'm going to talk about two issues. One is Article 35A and right to privacy. ये दो चीजों के बारे में मैं बात करूंगा. I'm sure you remember in our first session we talked about section 377 and section 498 of IPC. ये दो के ऊपर हमने बात करी. Now we are talking about something related to Indian Constitution. Indian Constitution के दो महत्वपूर्ण we can say मुद्दे. One is article number 35A and other is called right to privacy. Okay, अब समझते हैं exactly क्या हुआ. First topic we are starting is article 35A. So I'm sure being very smart students and very much aware student, you know when I'm talking about 35A, you know it refers to Jammu and Kashmir. So we are talking about Kashmir. So Kashmir before independence was known as Kashmir, not Jammu and Kashmir. It was semi-independent country. It was under British suzerainty ruled by डोगरा हिंदू किंग. ठीक है, हिंदू किंग थे है ना, राजा हरि सिंह, उनके अंडर में ये था. और ब्रिटिश सामंत के अंडर में ये राजा थे. द कंट्री हैज अ डाइवर्स एथनिसिटी, डाइवर्स क्लाइमेट, डाइवर्स टोपोग्राफी, है ना, डाइवर्स रिलीजन एंड कल्चर, है ना, एंड इट स्प्रेडेड फ्रॉम काराकोरम रेंजेस टू पंजाब प्लेन, एंड इट हैड मोर देन 80% पीपल, दे आर बेसिकली मुस्लिम पॉपुलेशन. ये था बिफोर इंडिपेंडेंस. ओके, नाउ द इश्यू ऑफ परमानेंट रेसिडेंट originated in 1927. Remember, Article 35A talks about permanent resident positions of Jammu Kashmir people. और ये permanent resident वाला post कब आया? It came in 1927 जब पंजाबी Muslim elite started to acquire land and various government jobs, and therefore the permanent resident of Kashmir, which are Kashmiri Pandit, Dogra group of people, they become very apprehensive, and therefore Raja Hari Singh in 1927 introduced a state subject law, and in that they said that is called permanent resident post. Permanent resident will get certain kind of benefits. तो ये कहानी चालू हुई 1927 से. ओके, अब ये 1927 में चालू हुई तो भारत आजाद हुआ 1947 में. जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तब राजा हरि सिंह was independent, पर अचानक से पाकिस्तान ने उनके ऊपर पीछे से अटैक करा. पाकिस्तान ने डायरेक्टली अटैक तो नहीं करा, पर ट्राइबल लोगों के द्वारा अटैक करवाया. राजा हरि सिंह came to India and he said, I want to be part with India because India should protect Kashmir, and he can say came with a kind of agreement called instrument of accession. ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, उन्होंने बहुत ही सिंपल सा काम किया है. कागज रख दिया कि भाई साहब इसके ऊपर साइन करो that you agree to join with India, only then India can support you, ना. ठीक है, so he signed. He said it gave New Delhi control only over 3 part. इंडिया ने ऐसा काम बहुत सारे और स्टेट के साथ भी किया था that we try to take control over certain issues. ठीक है, और धीरे धीरे हमने पूरा कंट्रोल ले लिया. ठीक है, यहाँ पे भी हमने वैसा किया. ठीक है, क्या चीज के ऊपर? कश्मीर का डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी एंड कम्युनिकेशन. इन ऑल अदर मैटर्स स्टेट गवर्नमेंट रिटेन द पावर. स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरा पावर रहेगा, और ये सबके लिए पावर किसके हाथ में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके हाथ में रहेगा. दो it was not fully integrated state in India, and the issue became more complicated by New Delhi's international commitment.
to hold plebiscite. इंडिया की तरफ से हम ये पूरे इश्यू को कहां लेकर गए? यूनाइटेड नेशन। और यूनाइटेड नेशन में ये एग्रीमेंट आया दैट इंडिया शुड फॉलो द प्लेबिसाइट, इंडिया को प्लेबिसाइट करवाना चाहिए, वहां के लोगों से पूछना चाहिए कि उन लोगों को किनके साथ रहना है, उनको इंडिया के साथ रहना है या पाकिस्तान के साथ रहना है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन में ये बात कही तो इंडिया ने बोला कि भैया हम वही बात मानेंगे, पर प्लेबिसाइट तभी होगा जब पाकिस्तान अपनी आर्मी को पूरी कश्मीर से हटा दे, और पाकिस्तान ने अपनी आर्मी हटाई नहीं, पाकिस्तान ने अपनी आर्मी हटाई नहीं, हमने भी नहीं, हमने भी प्लेबिसाइट नहीं करा। तो ये तरीके से ये पूरा का पूरा तरीके से झमेला बर्बादी के कगार पे खड़ा हो गया। सो व्हाट इज द सिचुएशन इन दोस डेज? उस जमाने में क्या सिचुएशन थी? शेख अब्दुल्ला वाज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ Kashmir. The state had its own constituent assembly. They had a separate flag, and they had a separate custom checks between India and their state. Supreme Court of India did not have any jurisdiction there. Kashmir militia was constituted as a separate force. Srinagar tried to send its own trade commissioners to foreign countries. दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करने के लिए श्रीनगर ने अपने लोग भेजे. India's fundamental right and directive principles are not applicable in जम्मू कश्मीर. तो जम्मू कश्मीर में ये एप्लीकेबल नहीं हुआ. भारत का कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 में आया. न्यू दिल्ली का पावर ओवर जम्मू कश्मीर was defined more clearly not in constitution but subsequently in 1954 by a presidential order. और उसी की वजह से ये 35A पंगे में आ रहा है. बिल्कुल ध्यान से सुनना. 35A क्यों आज की तारीख में बातें हो रही है? Because of this 1954 presidential order. Now what is this presidential order? In 1954, New Delhi negotiated a new agreement with the then Prime Minister of called Mr. Bakshi. Again, it was passed by Kashmir Constituent Assembly in February, and eventually it was introduced as a presidential order in the month of May. ठीक है, अब इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में क्या हुआ? इट स्टिल प्रोवाइडेड लॉट ऑफ पावर इन द हैंड ऑफ स्टेट. ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल रेसिडुअली पावर वर वेस्टेड विद द स्टेट लेजिस्लेचर व्हाइल ओनली फ्यू पार्ट वर रिटेन्ड इन द हैंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. इट रिटेन controversial land reform measures and final authority over any alteration in the state's boundary lies with the state legislature. For the first time, India's fundamental rights and directive principles were applicable to Jammu and Kashmir, and state's finances were integrated with India through this presidential order. ध्यान से सुनना. ठीक है, the lesser known provision at that time was article number 35A. ठीक है, the order also extended Indian Supreme Court's jurisdiction over certain aspect of Jammu Kashmir. Overall, gist of the order was to give government of India enormously more power over state than it had enjoyed before. तो उसकी वजह से काफी ज्यादा पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आया. In fact, at the time of its introduction, the order was celebrated in India as a great step towards bringing Jammu and Kashmir more with Union of India. तो ये उन्होंने बिल्कुल लेकर आए. पर ये 35A was a lesser known scenario. अब आज 35A क्यों न्यूज में है? Now 35A को चैलेंज किया गया है. 35A is giving permanent resident power in the hand of Jammu Kashmiri people. मतलब if you are not from Jammu Kashmir, inheritance rights आपके साथ नहीं लगेंगे. ठीक है, तो ये बड़ी परेशानियां हो गई है. ठीक है, तो 35A was challenged now. अब ये चैलेंज किसने किया? There was a writ petition filed by an NGO called We the Citizens. They challenged validity of both articles 35A and article number 370. I'm sure you know 370, which is given a special status to Jammu and Kashmir. Okay, अब बात आती है. It is argued that 4 representatives from Kashmir, they were part of Constituent Assembly involved in the drafting of the constitution, and the state of Jammu Kashmir was never accorded any special status in the constitution. तो उनके 4 लोग तो ऑलरेडी थे और कभी भी उसको स्पेशल स्टेटस नहीं मिला गया. Article 370 was only a temporary provision to help bring normalcy in Jammu Kashmir and strengthen democracy in the state, and therefore it has to be removed. So what is this Article 35?
It is a provision incorporated in 1954. So that means it was incorporated through, किस तरीके से उसको इंट्रोड्यूस किया गया था? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा. I hope you understand this. It gives Jammu Kashmir legislature a carte blanche. Carte blanche is blank check. ठीक है, क्या दिया गया भैया? ब्लैंक चेक दिया गया, जो करना है करो, जो डिसाइड करना है करो. Who are all permanent residents of the state. This confers on them special rights and privileges in public sector jobs, acquisition of property in the state, scholarship as well as public aid and welfare. उन सब में उनको स्पेशल मदद मिलेगा. If a native woman marries a man not holding permanent resident certificate, कोई भी native of Jammu Kashmir, a woman marries someone outside, then she would restrict her right of property. ठीक है, उनको कोई अधिकार मिलेगा नहीं. तो ये तरीके से 35A है, और जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि भैया ये तो गलत बात है. अब 35A रखने का लॉजिक भी है. भाई 35 रखने का लॉजिक है that it protects states distinct demographic character. Kashmir is a region of Jammu and Kashmir, and it is a Muslim majority region, and the presumption is dilution of Article 35A will encourage Hindus to migrate to this state, and thereby it will alter the entire character of the state. Okay, so basically ये जो भी changes आए, ये changes constitution को amend करके आए कि नहीं आए, यही बड़ा सवाल है. और ये बिल्कुल नहीं आए. It came through presidential order. It did not come from article number 368. I'm sure you know article number 368. Yes or no? It is for amendment in the constitution. Amendment कौन कर सकता है? Parliament कर सकता है. Presidential order के द्वारा changes. So that is where the, you can say, controversy lies. अभी ये matter Supreme Court में है. The matter is sub judice and the case is going to be heard in 2019. So what are the major challenges? The challenges before Supreme Court is this: not allowing Indians, that is outsider of Jammu Kashmir, is a violation of fundamental rights, and therefore 35 तो निकाल देना चाहिए. अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे? Number 2, Article 368 is the only way to amend the constitution or not, or there should be a presidential order. अगर मानो ये presidential order invalid माना गया 2019 में, तो 1950 के बाद जितने भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया है सबको निकाल देना पड़ेगा. तो बहुत सारे बड़े बड़े चेंजेस आए. ठीक है, तो अब भैया वेट एंड वॉच का कहानी है. जनवरी फरवरी, जब जितना जल्दी इसका डिसीजन आए सुप्रीम कोर्ट में उतना मजा है. ठीक है, चलिए ग्रेट. So this is what related to Constitution, Article 35A. Now I talk about another part called, you can say, right to privacy. ठीक है, मजेदार सा जजमेंट आया. राइट टू प्राइवेसी ये 2017 में आया था. ठीक है, राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इस तरीके से जजमेंट आया ऑन 24 August 2017. Supreme Court of India in a historic judgment declared right to privacy as a fundamental right protected under Indian Constitution. In declaring that this right stems from fundamental right to life and liberty, that means वो आर्टिकल नंबर 21 से निकलता है. ठीक है, अब इसकी वजह से क्या क्या बदलाव आ सकते हैं वो अब हम बात करते हैं. सबसे पहली चीज बात करेंगे कि भैया ये कितने जज की बेंच थी? 9 जज की बेंच थी. 9 जजेस बेंच. ठीक है, एंड दिस केस इज आल्सो पॉपुलरली नोन एज पुट्टू स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. AILET जैसी एग्जाम में ऐसे सवाल बहुत आते हैं. ठीक है, क्लैट की एग्जाम में भी अब धीरे धीरे ये बढ़ने वाला है. दैट यू शुड नो लेटेस्ट लीगल थिंग. ओके, चलिए ग्रेट. सो पुट्टू स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, they has declared that right to privacy is a fundamental right, while primarily focused on individuals' right against the state for violation of their privacy. This landmark judgment will have lot of repercussion on not just the state but even on the non-state actors. ऐसा नहीं है कि आपकी प्राइवेसी सिर्फ स्टेट की तरफ से प्रोटेक्ट करी जाएगी. नॉन स्टेट मेंबर के द्वारा भी इसको प्रोटेक्ट करने का कॉम्प्रिहेंसिव लॉ बनाने का प्लान है. ठीक है, तो क्या क्या मुद्दे आए इसके अंदर देखते हैं. द केस केम इन द कनेक्शन टू अ लीगल चैलेंज टू आधार. आधार का एक लीगल चैलेंज आया था दैट कि भाई आधार वैलिड है कि नहीं. ठीक है, अगले एक वीडियो में
वी विल टॉक अबाउट आधार के ऊपर भी हम बात करेंगे, ठीक है. पर एनीवे कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, आधार के द्वारा जो डेटा कलेक्ट किया जाता है दैट इज वैलिड और नॉट. सो इट वाज आर्ग्यूड दैट प्राइवेसी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट. ऐसा स्टेट की तरफ से, सरकार की तरफ से आया, ठीक है. आर्ग्यूमेंट्स वर बेस्ड ऑन टू प्रीवियस केसेस कॉल्ड एमपी शर्मा एंड खड़क सिंह केस, ठीक है. एमपी शर्मा 8 जजेस की बेंच थी और खड़क सिंह के केस में 6 जजेस बैठे. In both cases, it was held that the Constitution of India does not specifically protect right to privacy. ठीक है. क्या हुआ था एमपी शर्मा केस के अंदर? It dealt with the right against self incrimination. सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अगेंस्ट में ये केस हुआ था, ठीक है. While it did mention that right to privacy in a passing manner they mentioned, but it was clear that these comments were still observation at the base and they did not focus on precise information कि राइट टू प्राइवेसी में क्या करना चाहिए. सिमिलरली खड़क सिंह के अंदर भी कंफ्यूजिंग हो गया, ठीक है. उन्होंने बोल दिया दैट ऑन वन हैंड दैट इट इज कॉल्ड इंट्रूजन, ऑन द अदर हैंड दे सेड कि भाई सरकार इस तरीके से लोगों को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है. अब हुआ क्या, ये बड़े बड़े बेंचेस थे, 8 जजेस, 6 जजेस. उसके बाद जब भी बात आई तो छोटे छोटे कम कम जजेस के बेंचेस थे, तो वो हमेशा ये रखते थे कि भाई हम इसके ऊपर कोई बात न करें, ठीक है. तो ये जजमेंट के की फाइंडिंग क्या है? रिमेंबर, इट वाज अ 9 जज बेंच एंड इट वाज अ यूनिनिमस. ऑल 9 जजेस concurred the final order. There were 6 judges. कौन थे? जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस नरीमन, जस्टिस चिलमेश्वर, जस्टिस पॉल, जस्टिस सापरे and justice Bobde. They wrote separate opinion covering all wide-ranging issues. क्या क्या issues आए, क्या की फाइंडिंग आए? पहला, right to privacy is a fundamental right. क्या बोल दिया गया भैया? Right to privacy is a fundamental right. The Supreme Court confirmed that it is coming from article number 21. It is a natural right. ठीक है. It is not inalienable. उसको निकाला नहीं जा सकता है, वो लाइफ के साथ ही आया है. It is fundamental and inalienable right and attaches to the person, covering all information about that person and his choices. ठीक है. It protects individual from the scrutiny of the state in their home, of their movement, over their reproductive choices, over their choices of partners, food habits. हर तरीके की चीजों में प्राइवेसी का अधिकार आपके पास है, मेरे पास है, एक इंडिविजुअल के पास है. ये उन्होंने क्लियर कट बोल दिया. अब उन्होंने एक और चीज बताई, दैट राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट बट it is not an absolute right and thereby it is subject to reasonable restriction. Supreme Court was at its pain to clarify that fundamental right to privacy is not absolute and will always be subject to reasonable restriction. तो कोई legitimate purpose की वजह से, कोई नेशनल इंटरेस्ट की वजह से, अगर पब्लिक पर्पस के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए अगर ये लगाना पड़ा तो लगा देंगे, उसको रोक दिया जाएगा. Existence of law that justifies an encroachment on privacy is basically will be removed. पर अगर वो पब्लिक वेलफेयर के लिए है ना, और उसकी वजह से वो लॉ लगाने की जरूरत पड़ती है, they can a legitimate state aim or need that ensures that nature or the content of this law falls within the zone of reasonableness, so they can restrict it. तो ये कोई absolute नहीं है. और तीसरा, there are other incidental implications. So lot of, we can say, significance are attached. So it says that individuals right to privacy, ठीक है, regarding his sexual choices should also be part of this. इसी की वजह से जो 377 था उसको लगाना पड़ा, ठीक है. बिल्कुल ध्यान रखिएगा. To the extent that the judgment has stated the state cannot interfere in the food choices of the individual, it will have an impact on various cases protesting the ban on beef. है ना, बीफ के ऊपर पूरा बैन लगाना, उसके ऊपर भी बड़ा काम आएगा, ठीक है. जजमेंट हैज आल्सो मेड सेवरल ऑब्जर्वेशन ऑन कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन पर्सनल प्राइवेसी एंड बिग डेटा. मतलब आज की तारीख में जो बिग डेटा, जो एक क्या बोलते हैं, फेसबुक और गूगल हमारा डेटा लेकर उसको एनालाइज करके लोगों को देते हैं, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आने की भरपूर संभावना बन गई. इट ऑल्सो रिकग्नाइज दैट द इम्पैक्ट is not only on the state but also on the
नॉन स्टेट एक्टर उनके ऊपर भी लगेगा. So this is what they pointed out. Okay, so what will be the impact of right to privacy? कहाँ पे impact होगा भाई? immediate तो कोई impact नहीं है, but Indian courts will come out with lots of cases और वहां पे वो बिल्कुल सोच समझ कर अपना जजमेंट देंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 377 पे आधार कार्ड के ऊपर, ट्रिपल तलाक के ऊपर उन्होंने बहुत ध्यान से काम किया. अब सवाल ये आता है, व्हाट विल हैपन टू सर्वेलियंस ऑन सोशल मीडिया बाय द स्टेट? भाई स्टेट हमारे पीछे, हमारे फेसबुक को ट्रैक करता है, ट्विटर को ट्रैक करता है, इंस्टाग्राम को ट्रैक करता है. उस समय पे हम क्या करेंगे? स्टेट मे बी स्यूड इफ दे वायलेट द फंडामेंटल राइट. पर स्टेट अगर पब्लिक वेलफेयर के लिए कुछ कर रहा है, मतलब इनकम टैक्स वाला आपके फेसबुक के पीछे पड़ गया और आपने सरकार को टैक्स पे नहीं किया और आप बड़ी बड़े गाड़ियां, बड़े बड़े चीजें दिखाते हो अपने फेसबुक पे, तो भैया प्रॉब्लम हो जाएगा. ठीक है, तो स्टेट उस लेवल तक तो आपको सर्वेलेंस कर सकता है. व्हाट विल हैपन व्हेन एन इंडिविजुअल एंड नॉट द स्टेट वायलेट्स योर राइट टू प्राइवेसी? सरकार ने नहीं किया पर एक इंडिविजुअल ने किया, तो क्या करेंगे भाई? आप उनको स्यू कर सकते हो. ठीक है, यू विल गेट रेमेडी फॉर दैट. एंड व्हाट इज द स्टेटस ऑफ प्राइवेसी ऑफ कस्टमर्स, employees and lot of other people? So government may possibly come out with a comprehensive law on this and to protect right to privacy. Right to privacy को protect करने के लिए सरकार ये भरपूर काम करेगी. So to conclude this particular session, we talked about constitution के दो महत्वपूर्ण मुद्दे, 35A and right to privacy. ठीक है, 35A तो अभी उसकी सुनवाई बाकी है, राइट टू प्राइवेसी की सुनवाई हो गई है. 21 आर्टिकल के मुताबिक इसको तो फंडामेंटल राइट माना गया है और इसके द्वारा ये सब बड़ी परेशानियां क्रिएट होगी. ठीक है, पर हमारे लिए ये सीखना बहुत महत्वपूर्ण था. तो मेरा मानना है दैट यू हैव टू यू कैन से री वॉच दिस, वापस देखें इसको, समझे. ठीक है, और अच्छी तरीके से अपने दिमाग में डालें कि क्या बातें चल रही है. ओके, चलिए, ग्रेट. So with this, I'm closing this particular module. But if you like this video, share to a lot of your friends and comment on this video and make sure that you subscribe our channel. Okay? And you get this PDF on protalentdigital.com. They will be very useful to you for your learning. Okay? Thank you very much.